Hello, 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 So in this session, I'm going to study data structure and algorithm. So I will be following Geeks for Geek for the revision. Data structure and algorithm is the study of organizing data efficiently using data structures like array, stack, trees with step-by-step procedures to solve problem effectively. Data structure manages how data is stored and accessed, while algorithm focus on processing this data. So why do we need to do DSA or learn DSA? So learning DSA boosts your problem solving abilities and make you a stronger programmer. DSA is foundation for almost every software like GPS search engine, chatbots, web application, etc. Top companies like many other heavily focus on DSA in interviews. Learn at least one programming language, learn about time space complexity, learn data structure and algorithms. Okay, so the first we will going to start with the array. First we will see the concept and then try problems related to this. So array is one of the most widely used data structure and is frequently asked in coding interviews to problem solving skills. Okay, total 50 questions are there. Let's start with the easy problem. Largest element in an array. You are given an array of positive integer. The task is to find largest distinct element in the array. Note if the second largest element does not exist, then return -1. So here is the input given and we need to find out the second largest element. So the brute force I can think is first I can sort this array. So in O of n log n we can sort this whole array and in suppose in either in the decreasing order or increasing order. So let suppose I sort this array in increasing order, then I take the size of this array element and go to the n minus 1 index, n minus 2 index. Sorry. Suppose I take this 12, 35, 110, 34. First problem is the second largest element.
what will be my brute force? Suppose these are my array elements. This is the input given. This is my brute force. Okay. So step 1, I sort this array element in ascending order. In O of n log n. So you can use the built-in approach. You can use the STL library to sort the element, or you can write quick sort or merge sort algorithm to sort this array element. In STL you can use in C++ you can use the sort inbuilt function. So after the step 1 you have successfully performed the sorting the array elements. You will get this sorted array like this: 1, 10, 12, 34, 35. This is your sorted array element. Now you will, at step 2 you will going to find the size of this array element. Int in n equals to air dot size. So the size will be 1, 2, 3, 4, 5, 5. So in order to find the second largest element, so suppose the actual index of this array element is 0, 1, 2, 3, 4. We want 3. We want to access this third index. So step 3, so this is the brute force, and the time complexity of this is O of n log n. And space complexity, if you are using some extra array to store this element, then it will going to take O of n. Here in this case I am utilizing this input array, so it will be O of 1. So this is the brute force. Now let's see about the efficient approach to solve this problem. So let's see the approach of GFG. My approach is using sorting the same way I have done. So in C++ you use this inbuilt function. This approach, this brute force work only when we have unique elements. So we have to form a base case which is going to check the last and second last element should not be equal.
So here they are checking if the last and the second last is not equal, then you are going to return this is the second largest element. Else you will decrement the index and compare that. If we do not find the second largest element, then we simply return the -1. Time complexity is O of n log n and auxiliary space is O of 1. And the better approach is the two-pass search. The approach is to traverse the array twice. In the first traverse, find the maximum element, and in the second traverse, find the minimum element, ignoring the one we found in the first traversal. First traversal, we have find out the largest element. Find second largest element is simple pass search. So the better approach is the two-pass search. So in the first traversal, we need to find out the maximum element, and in the second traversal, find the maximum element, ignoring the one. Okay. So in this approach, we will do two times traversal. This is a two-pass solution. In the first pass, we find out the largest element. Suppose the largest element we found, we stored in this variable largest, and in the second pass, we again find out we again find out the largest element. After ignoring ignoring this largest, मतलब जो फर्स्ट पास में हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट किया है उसको हम टोटली इग्नोर कर देंगे हम सेकंड ट्रेवर्सल में। जो सेकंड ट्रेवर्सल में लार्जेस्ट निकलेगा वही हमारा
आंसर को वो हम रिटर्न कर देंगे। सपोज इस एरे में इस एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पास में निकला 35। तो इसको इग्नोर करके हमारी जो सर्च स्पेस होगी वो 1 to 4 तक रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हमें इस रिड्यूस स्पेस में फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट एलिमेंट। सो इसमें हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ओ ऑफ एन में काम चल जाएगा। दो बार ट्रेवर्सल कर लें, ओ ऑफ एन प्लस एन। और एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायर्ड नहीं है, तो दिस इज द बेटर सोल्यूशन देन द ब्रूट फोर्स। तो एक कंडीशन लगानी है ट्रेवर्स करते वक्त ये, कि जो हम एरे एलिमेंट हमारा नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट होना चाहिए। अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट नहीं मिला तो सिंपली रिटर्न कर देंगे -1। इसलिए हमने वेरिएबल्स को -1 से इनिशियलाइज कर रखा है। अगर सारे एलिमेंट सेम भी होंगे तो ये अपडेट ही नहीं होगा, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट। तो एज इट इज़ ये -1 रिटर्न करेगा। और ये एक्सपेक्टेड अप्रोच, ये वन पास सर्च है। ये हमारे टू पास सर्च से भी ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन है। इसमें सिंगल ट्रैवर्सर ही लगेगा। सिंगल ट्रैवर्सर ही लगेगा। लार्जेस्ट, मतलब जो फर्स्ट पास में हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट किया है उसको हम ओके, ये बेटर अप्रोच है। तो सपोज कर लो फर्स्ट आइटरेशन में हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट कर दिया है। तो सेकंड आइटरेशन में क्या होगा कि ये जो हमें ये लार्जेस्ट का ओल्ड वैल्यू होगी ये हम सेकंड लार्जेस्ट को दे देंगे। तो ऐसे करके हमारी ओ ऑफ एन टाइम्स में ही सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगी। और एक ये एक्स्ट्रा बेस कंडीशन लगाइए, अगर कोई एलिमेंट है लेस देन लार्जेस्ट है
और बट वो एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन हमारा प्रीवियस सेकंड लार्जेस्ट से है, तो हम अपडेट कर देंगे सेकंड लार्जेस्ट को। ये ट्राई करते हैं ये वाला सोल्यूशन। Feature, this is the base condition here। अगर एलिमेंट मेरा लार्जेस्ट जो इस लार्जेस्ट वेरिएबल में से जो एलिमेंट है उससे बड़ा हुआ एरे ऑफ आई, तो मैं अपडेट कर दूंगा लार्जेस्ट। इससे पहले मैं क्या करूँगा, जो इसकी लार्जेस्ट की ओल्ड वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में पुश कर दूंगा, एंड इधर लार्जेस्ट को अपडेट कर दूंगा, लार्जेस्ट इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ओके, अब एल्स में देखते हैं कि अगर एरे ऑफ आई लेस देन लार्जेस्ट होगा बट एरे ऑफ आई ग्रेटर देन second largest, so in that case I'm going to update second largest। इधर लिख लेता हूँ कौन से अप्रोच देख लिए हमने। अप्रोच टू फाइंड आउट सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट अप्रोच देखी थी यूजिंग सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वाले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रही थी वो ओ ऑफ एन लॉग एन लग रही थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होनी थी। सेकंड थी टू पास सर्च। इसमें हम दो बार इटरेशन कर रहे थे। फर्स्ट पास में हम लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहे थे, और सेकंड पास में अगेन लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहे थे, बट इग्नोरिंग द लार्जेस्ट वी फर्स्ट फाइंड आउट इन द फर्स्ट सर्च। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन से ओ ऑफ एन बर्न डाउन हो गई थी, ओ ऑफ एन प्लस एन। हेयर आई कैन अप्रोक्सीमेटली राइट दिस
it will be O of n, and its complexity will be O of 1. So the third approach we have seen is the one pass search. ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी O of n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 थी. इसमें हमने वही दो वेरिएबल का यूज़ किया था. नेक्स्ट वी लुक आउट द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट. सो अगेन हम सेम यही तरीके से देख सकते हैं. ब्रूट फोर्स वही होगी कि सॉर्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम थर्ड लास्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे और वही हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा. और बेटर अप्रोच इससे होगा कि थ्री पास करेंगे. पहले दो पास में हम लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, और थर्ड पास में हम यूजिंग सेकंड लार्जेस्ट वी कैन एलिमिनेट दिस rest of the element and find out from the reduced space what is my third largest element. So till O of n I can find out. So the better approach is using the three variable. So this is the same we have seen in the finding out the second largest element. We have used two variable there. In the same way we can use here the three variables for second and third, and in the base condition we can eliminate our second largest and largest to find out third largest element. So this is the O of n solution. So first, second, third initialized with int minimum. Okay, if we do not find out the third largest, we will going to return the minimum value, int min. So we first find out so third variable we have replaced with the second, and the second with the first. The same way we have done this in the two variable approach.
So due to the power cut, I will going to resume this session at 8. Till then you can follow this lecture and do revision from this GFG. So today we will going to cover all these topics. So at present we are at here in the array. The next we are going to cover a searching algorithm. Binary search is one of them. And there are popular sorting algorithm: bubble sort, insertion sort, quick sort, radix sort, bucket sort. So all this type of algorithm we will going to see in the next session. So in the hashing we will going to see all the approaches. So the next we will going to see the pointer techniques, two pointer. So basically you can use this to find out the efficient solution using this. The next will be the sliding window technique. The next prefix sum, we can pre-compute the sum and use this prefix sum to find out the efficient solution. And stack queue and linked list is also the important one. So in the tree section we will going to see binary search tree, and in heap we see the minimum heap and max heap. Then graph, the important one is the BFS and DFS. Then the greedy algorithm. So after this we find out the efficient solution using the dynamic programming, and at last we see the advanced algorithms.